आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट फॉलोअप शेयर करना चाह रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने इसका क्यू कार्ड आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, बट ये जो फॉलोअप्स है मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगे क्योंकि कई बार रिपीटेड है और जो स्टूडेंट्स काफ़ी बार लैग कर जाते हैं बिकॉज उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि इसका आंसर हम किस प्रकार से दें और किस तरह के फॉलोअप्स भी आ सकते हैं जब हमें फेस नहीं किया होता है कि हाँ इस तरह के अगर कुछ आइडिया हो तो हम अपने और से कुछ तैयार कर सकते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता किस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम क्या होता है कि वहाँ पे हमारे बैंड स्कोर श्योरली डेड होने होते हैं बिकॉज हमें कुछ भी नहीं आइडिया होता, तब हम कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर सकते और हम थोड़ा हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल देते हैं। सो जो भी फॉलोअप्स की वीडियो होती है वो ज़रूर से वॉच किया करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही हेल्प करती है आपकी आइल्स प्रिपरेशन में। So first question is, should parents make plans for children? Yes, I think parents should make plans for the children till the children are not mature enough to plan something on their own. Parents should encourage children to take small decisions on their own, like what clothes to wear or what games to play, but should always guide them so that they don't suffer. When should children start to make plans for themselves? अगर आप लोगों को इनमें से लाइंस में से आई थिंक कि आप लोगों को हिंदी या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको नहीं समझ आती कि मैम इस लाइन का मतलब क्या था तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका आंसर जो है ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। आप मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा कि अगर मैं सिंगल लैंग्वेज में बोल रही हूँ तो ठीक है, या बायलिंगुअल, या फिर आप लोगों को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताऊँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को डायरेक्ट समझ आ जाता है या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। When should children start to make plans for themselves? भी चिल्ड्रंस को कब खुद के लिए प्लान्स स्टार्ट करने चाहिए बनाने के लिए? Children should start to make plans for themselves once their schooling is over and they have to choose subjects for their career. Here I feel that children should decide based on their aptitude so that their interest in their studies is mentioned and they do well at college or university. Third question is, what should be planned on daily basis? Many things have to be planned on daily basis, such as what clothes to wear, what hobbies to pursue, what programs to watch on TV and outdoor games to play, what to cook for lunch, for dinner, and what exercise to do keep physically fit. Our plans always necessary? Okay, fourth question, are plans always necessary? Can people succeed without plans? Yes, I think plans are always necessary. These may be short-term plans or long-term plans. It is the plans made in our minds that keep us going and give us the motive to work hard. If a person doesn't have any plan in life, then he will not know how much hard work to put in anything. I believe that generally people who have a plan succeed in life. Some people get success by sheer luck, but that is not very common. Mostly people who have a vision in their mind and who have set a goal succeed in life. Fifth question is, in general, how do people make plans? People make plans according to their situation by consulting their elders and also by realizing their own interests and hobbies. In general, how do people make plans? People make plans according to their situation by consulting their elders. Okay, ये हो चुका था. Or for a person with children, what influence does this have on their personal plans for the future? When a person has children, all the personal plans take a back seat and the upbringing of the child comes first. All the personal plans become flexible and revolve around the needs of the family and children. I think this flexibility has a charm of its own. Should parents set goals for children? Parents are the best people to set goals for the children. They can help their children in setting goals. They know the temperament of their child, and so it is all right if they set goals for them, but at the same time they should keep in the mind the aptitude of the child and set a realistic goal for him or her.
when do young children start to set goals for themselves? Children start to set goals for themselves after completing secondary, when they have to decide which college to join, but these goals are mainly in which college to join, but these goals are mainly in consultation with their parents. Once they start earning, they start setting goals independently. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉलोअप्स थे। नेक्स्ट वीडियो के फॉलोअप्स भी आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द शेयर करने की कोशिश करूंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।